Hello everyone, good morning. Today we are entering in the definite integration. That is new chapter we can say, but in our syllabus it is merged in indefinite integration. मतलब पूरा इंटीग्रेशन एक नाम देके पूरा चैप्टर बना दिया है, but actually the definite integration is different chapter. Remembering, so we are going to start a new chapter. ऐसा बोल सकते हैं. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन? तो जैसे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन था, उसमें हमें डोमेन नहीं दिए थे कि भाई कौन से डोमेन पे आप ये काम कर रहे हो, जबकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में डोमेन देंगे. तो किस तरह से उसकी स्टडी होगी? सो लेट वी सी इन दिस केस कि भाई डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो खास करके एरिया और वॉल्यूम के लिए होता है. पास्ट में एरिया एंड वॉल्यूम both were in our syllabus, but right now there is area only. तो area के हिसाब से I will explain you definite integral as the limit of sum. मतलब definite integration direct भी होता है and as the limit of sum होता है. As the limit of the sum. Sum means summation means sigma आने वाला है. Limit means limit भी आएगी. तो limit और sum से हमें definite integration कैसे निकालना है? तो suppose यहाँ पे हमने देखा कि भाई इट इज अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. सपोज इट इज क्लोज इंटरवल ए बी. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी a0 and coordinate of this point will be b0. The line passing through a0 and perpendicular to x axis is known as x equal to a. Line passing through b0 and perpendicular to x axis is known as x equal to b. In this interval our curve is this y is equal to fx which is continuous. कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, means it is continuous. Also it is differentiable. Continuous as well as it is differentiable. So this curve y is equal to fx is continuous and differentiable in closed interval AB. And these four curves, line x equal to a, line x equal to b, x axis and curve are making closed region. This closed region is irregular, like circle. Circle is regular shape. Rectangle is regular shape. Square that is regular shape, but this is irregular shape. So we have to find the area of this irregular shape bounded by curve to lines and x-axis. How can we find the area? So first of all, we will divide whole region in this kind of parts. मीन्स जितने पॉसिबल हो उतने छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे. जितनी इसकी ब्रेथ कम होगी, विड्थ कम होगी, तब हम बोलेंगे लेंथ इज इट्स एरिया. अगर विड्थ बहुत छोटी है, व्हेन वी इग्नोर इट, सो एट दैट टाइम द लेंथ विल बी एरिया. व्हेन विड्थ इज वेरी स्मॉल, तो बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल्स में हम इसे डिवाइड करेंगे और फिर जितने भी ये पार्ट बनेंगे, सम ऑफ ऑल पार्ट्स इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस इररेगुलर शेप. याद रखना. तो यही चीज एज अ लिमिट ऑफ सम में हमें दी हुई है. किस तरह से? सी इफ f is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB. It is necessary condition. The function should be continuous and differentiable. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये प्रोसेस नहीं कर सकेंगे.
So f should be continuous and differentiable. Divide closed interval AB in n equal sub intervals such that length of each interval will be h is equal to b minus a upon n. याद रखना, जो यहाँ पे width है ना, जो इसकी ब्रेड्थ है, उसे हम यहाँ पे लेंथ कहेंगे. लेंथ ऑफ ईच इंटरवल विल बी h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n. n पार्ट करने, as n टेंड्स टू इंफिनिटी, जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे लेंथ विल बी टेंड्स टू जीरो. लेंथ विल बी टेंड्स टू जीरो. सो as n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू जीरो. जितने ज्यादा पार्ट करोगे, आप समझ लो कि ये पेन है, अब मुझे इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है. सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी लाइक दिस. बट इफ आई वांट टू डिवाइड दिस इन 10 पार्ट्स, सो छोटे छोटे हो जाएंगे. चलो 100 पार्ट करने तो और छोटे होंगे, 1000 पार्ट करने तो बहुत ही बारीक होंगे, एक 1 लाख पार्ट करने तो ऑब्वियस द लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी टेंड्स टू जीरो. गेटिंग माय पॉइंट? सो जितने ज्यादा ये इंटरवल्स बनाएंगे, सो विड्थ, यहां पे लेंथ बोला है वही चीज को, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल विल बी टेंड्स टू जीरो. सो एंड therefore integration a to b fx dx, integration a to b fx dx. Here a is called lower limit of this interval, b is called upper limit of this interval, f is defined in closed interval ab. So this is our domain. देखो आगे वाली सारी एक्सरसाइज में डोमेन नहीं था, दैट्स व्हाई वो सारा पार्ट था इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. नाउ वी आर डूइंग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. इक्वल टू आइदर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और h टेंड्स टू जीरो. दोनों में से किसी एक वेरिएबल को ही हम लेंगे. h सिग्मा I running from 1 to n f of a plus I h. तो इस तरह से हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रल डिफाइन करेंगे by using this method. See, in the left hand side we have integration, whereas in right hand side we have sigma means summation and limit. That's why it is called definite integral. As the limit of sum, मतलब लिमिट ऑफ सम से विदाउट इंटीग्रेशन वी विल फाइंड द इंटीग्रल, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम. तो ये आपको लिमिट यानी लिमिट मतलब 11th में जो आया था टॉपिक आपका, वो यूज करना है, राइट? सो ये पूरा फॉर्मेट आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में अगर कहा है कि एज द लिमिट ऑफ सम, तो कंपलसरी लिखना है. हाँ, डायरेक्ट करोगे तो चलेगा, फिजिक्स वालों ने आपको बता भी दिया होगा कि इंटीग्रेशन करो देन गिव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विल गेट द आंसर. तो वो तो है हमारा प्रॉपर वर्क, पर एक टॉपिक ये भी हमें दिया हुआ है, पूरी एक एक्सरसाइज 7.8 पूरी शायद आएगी, पूरी एक एक्सरसाइज हमें दी हुई है कि फाइंड द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम. मतलब पूरा फॉर्मेट भी लिखना है और यही मेथड से हमें सम करना है. या तो आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी कंसीडर करना है, या तो आपको h टेंड्स टू जीरो कंसीडर करना है. यहां से कोई भी एक वेरिएबल में आपको काम करना है, और इसके लिए आपको लिमिट की फॉर्मूला याद होनी चाहिए. सो वी हैव सम फॉर्मूले, आपको वो भी याद रखना है. सी, फर्स्ट sigma n. Sigma n means n into n plus 1 by 2, याद होना चाहिए. सेकेंड
sigma n square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Third one, sigma n cube equal to n square into n plus 1 whole square by 4, or you can write n into n plus 1 by 2 the whole square. एक तो ये तीन फॉर्मूला को याद रखनी है, यहां पर हम यूज करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव सम फॉर्मूले अबाउट लिमिट. फर्स्ट, as limit n tends to infinitive 1 upon n is 0. अगर n tends to infinitive है और फॉर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है then it gives 0. Second one, limit n tends to infinitive 1 upon an plus b is 0. It is general form of this formula, because if we take a equal to 1 and b equal to 0, the formula will be this, previous formula बन जाएगी. So it is general form, remember it. Third one, limit n tends to infinitive 1 upon p raised to n, sorry n raised to p is also 0. मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर हो उसी के लिए 0 लिमिट नहीं आएगी. अगर p is 2, so it is n square, 1 upon n square, 1 upon n cube, 1 upon n raised to 4. सब के लिए whenever n is playing in the denominator, every time as limit n tends to infinity, its limit will be 0. Remember it, right? चलो उसके बाद और दो फॉर्मूला. limit h tends to 0 a raised to h minus 1 upon h is log a base e. A raised to h minus 1 upon h equal to log a base e. And second one is taking e in place of a, it will be limit h tends to 0 e raised to h minus 1 upon h is equal to log e base e, but log e base e that is 1. तो ये सब कुछ आपको as limit of the sum में यूज करना है सारे फॉर्मूले. n tends to infinitive, h tends to 0, we have two variables. कब किसका यूज करेंगे ये आपको समझना है. See, only 3 types we have. 3 टाइप के सम्स हमारे सिलेबस में रखे हैं. एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. ट्रिगोनोमेट्रिक वाले बुक में नहीं दिए, सो अलग से मैं करवाऊंगा. एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं. Whenever the sum is in the algebra form, we will use n tends to infinitive. But if it is in exponential form or trigonometry, ट्रिगो में भी 2 ही फंक्शन आएंगे, साइन एंड कॉस. बाकी किसी को एंट्री नहीं है. सिर्फ और सिर्फ परमिशन मिली है साइन और कॉस को, दे कैन एंटर इन द लिमिट ऑफ सम. बाकी किसी को एंट्री नहीं है. ट्रिगो में सिर्फ 2 ही फंक्शंस. और एक्सपोनेंशियल, सो इफ वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगो, वी विल यूज h टेंड्स टू 0, मींस ये फॉर्मूला आएगी. एंड इफ वी हैव अलजेब्रा, वी विल यूज n टेंड्स टू इंफिनिटी. एट द टाइम फॉर्मूला विल बी दिस, राइट? सो इतना लिख लो, यानी सम स्टार्ट करें हम. See in exercise 7.8, the first question is integration a to b x dx. So the function is x. The limits are a and b. Lower limit is a, upper limit is b. Whole format we have to write in all the sums whenever we are doing as the limit of sum, right? चलो तो यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. इंटरवल बनेगा ए बी, एफ एक्स इज एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB. Divide closed interval AB in n equal parts, n equal subintervals such that the length of each subinterval is h is equal to b minus a upon n, and as n tends to infinity, h tends to 0. Function is algebraic, so limit n tends to infinity we will use. So in place of h we will write b minus a upon n, मतलब h की जगह हम n एंटर करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, राइट. सो therefore इंटीग्रेशन a to b x dx equal to limit n tends to infinity h sigma I running from 1 to n f of a plus ih. fx is x, so f of a plus ih will be a plus ih. By definition of fx is x. In place of a we have a, मतलब value already आ चुकी है, right? So after giving the function equal to limit n tends to infinity, h की जगह we will write b minus a upon n. हर जगह जहां पर h है we will enter n. Sigma I running from 1 to n, it is a plus ih. Now remember it, I is variable for sigma whereas n is variable for limit. लिमिट के लिए n वेरिएबल है, सिग्मा के लिए i वेरिएबल है, तो लिमिट के लिए i कांस्टेंट हो जाएगा और सिग्मा के लिए h मतलब n कांस्टेंट हो जाएगा. नाउ इसे अंदर ले जाओ बाय द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b minus a upon n into a is constant, sigma I running from 1 to n 1 plus h is constant for sigma I running from 1 to n I. तो सिग्मा n की फॉर्मूला यहाँ पे बनेगी एंड सिग्मा 1 is n, राइट. सो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b minus a upon n into a sigma 1 is n plus h is b minus a upon n into, according to formula of sigma n, I running from 1 to n, so we will use sigma n, that is n into n plus 1 by 2. एक n चल बसा इक्वल टू. अब देखो इन दिस काइंड ऑफ सम्स हम फॉर्म बनाएंगे 1/n. जैसे ही हम 1/n फॉर्म बनाएंगे इससे फायदा ये होगा कि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, मतलब हर जगह पे जहां पर 1/n है विल बी 0. सो जितनी n की सब बड़े से बड़ी एक्सपोनेंट है वो हम कॉमन लेंगे. फॉर दैट सी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b minus a upon n an प्लस b माइनस ए, मैंने ये ब्रैकेट में से n कॉमन लिया, सो इट विल बी 1 plus 1/n. यही बड़ी चीज है, याद रखना. ये बाय 2 है, 1/n फॉर्म बना देना है. जितनी n की बड़े से बड़ी एक्सपोनेंट है कॉमन ले लो. अब इन दोनों में से n आएगा बाहर, सो इक्वल टू
limit n tends to infinity b minus a upon n into n लिया बाहर कॉमन, सो इंटू a प्लस ये n निकल गया b माइनस a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 n निकला n चल बसे। अब जहां पर भी आप देखोगे ईच एंड एवरीवेयर द फॉर्म इज 1 अपॉन n, जहां पर भी n है 1 अपॉन n फॉर्म बना दिया। सो कहीं पर भी अभी अनडिफाइंड टर्म नहीं हो रही है, कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है। सो बाय गिविंग लिमिट मतलब n की जगह इंफिनिटिव रखेंगे, जैसे ही हम n के प्लेस पे इंफिनिटिव रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटिव मींस 1 अपॉन n विल बी 0। सो फॉर्म विल बी b minus a into a plus this is 0, so b minus a by 2, अभी 2 is LCM, so b minus a into 2a plus b minus a upon 2, 2a minus a is a plus b plus a into b minus a will be b square minus a square by 2. So this is the question and this method is called as the limit of sum। मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया फिर भी मुझे इंटीग्रल मिला है यूजिंग लिमिट ऑफ सम। अगर मैं इंटीग्रेशन से ये सम करूं तो देखो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं बोला हुआ है मैं क्या इज लिमिट ऑफ सम, सो डायरेक्ट वी कैन, जैसे कि इंटीग्रेशन a to b x dx, the integral of x is x square by 2, upper limit lower limit a to b, now give upper limit in place of x minus lower limit in place of x। ऐसा फिजिक्स वालों ने समझाया है, मैथ्स में भी ये टॉपिक आएगा। तो पुटिंग b in place of x it will be b square by 2 then minus a square by 2, 2 is LCM, so b square minus a square by 2 which is our answer। so ये हो गया as limit of sum, clear point। so लिख लो इतना, एक और सम करें। now see second number 0 to 5 x plus 1 dx, फंक्शन इज एल्जेब्रिक, याद रखना। अभी इंटरवल चेंज हो गया है, a b के बदले आएगा 0 5, तो हम फॉर्मेट लिखेंगे ऐसा fx is equal to x plus 1 is continuous on close interval 0 5 and differentiable on open interval 0 5, divide close interval 0 5 in n equal sub intervals such that length of each sub interval is h is equal to b minus a upon n means 5 by n। clear? in every sum you have to write this format, therefore as n tends to infinity h tends to 0, whenever we have algebraic form use n tends to infinity, if we have trigo or exponential use h tends to 0। so integration 0 to 5 x plus 1 dx equal to limit n tends to infinity h sigma I running from 1 to n f of a is 0 plus IH, getting or not, equal to limit n tends to infinity, h means 5 by n,
because we have n tends to infinitive, so we will convert all the form in n form, right? Okay. Now sigma I running from 1 to n f of ih, according to definition of function, fx is x plus 1, means fih will be ih plus 1. Remember it. So equal to limit n tends to infinitive 5 upon n, giving function sigma I running from 1 to n ih plus 1. Now we know this. I is variable for sigma and h means n is variable for limit. याद रखना. तो मैं सिग्मा को ले जा रहा हूं अंदर, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 5 अपॉन n सिग्मा I running from 1 सिग्मा अंदर ले जाओ. So h is constant, I running from 1 to n I plus sigma I running from 1 to n 1. Getting or not? Equal to limit n tends to infinitive 5 upon n into h means 5 upon n, sigma I means n into n plus 1 by 2 plus sigma 1 that is n. एक एक n चल बसा. अब करेंगे क्या? अब करेंगे ये कि n की जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है वो हम लेंगे कॉमन और बनाएंगे फॉर्म 1 अपॉन n. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 5 अपॉन n, मैंने ब्रैकेट में से n कॉमन लिया, बट बिकॉज हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन ब्रैकेट इज 1, इट इज इन लीनियर फॉर्म, सो 5/2 इज कांस्टेंट. चलो यहां से n निकला, यहां नहीं था तो डिवाइड हुआ और यहां से भी निकला, ये चल बसा. नाउ वी कैन गिव द लिमिट बिकॉज वी हैव ईच एंड एवरीवेयर 1 अपॉन n, राइट? सो बाय गिविंग लिमिट 5 into 5/2 into 1 plus 0 plus 1 equal to 5 into 5/2 plus 1 equal to 5 into 7/2 is 35/2 is our Zingo answer. Is our Zingo answer. अभी मुझे इसे वेरीफाई करना है कि भाई मैं राइट हूं कि रॉन्ग. So let me see, direct we can do the integration. See, integration 0 to 5 x plus 1 dx. So the integral of x will be x square by 2. 1 का होगा x, 0 to 5. Now in whole answer, upper limit in place of x, minus in whole answer lower limit in place of x. So it will be 25/2 plus 5 minus सब कुछ 0. After taking 2 LCM, 2 5 is 10 plus 5, 35/2 is coming. बोलो क्लियर पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? सो मैं ये दो सम आपको होमवर्क में 2 टाइम्स दे रहा हूं और टेक्स्ट बुक में से 3rd क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं. थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, याद रखना, राइट? सो आज यहां तक रखते हैं. यही टॉपिक नेक्स्ट टाइम आगे चलेगा. ओके, सी यू, बाय बाय.